Dear viewers and learners, welcome to our YouTube channel Education Enclave. Today's topic is Millennium Development Goals for UGC NET Paper First General Paper Unit 9. Environment and development are interrelated which cannot be separated from each other. One cannot think of development without considering the environment. So, development is a continuous and constant process which is carried out for the benefits of the inhabitants and boost economy of nations. It is equally important for human beings as the environment. If development is carried out without considering the environment, it may have a negative impact on the environment. This in turn will cause harmful effects on the inhabitants. Thus, we want to enjoy the benefits of development. Conservation of the environment is necessary. یِم زن 8 Millennium Development Goals یِمن زن لیکھان چھِ MDGs یِم چھِ اصلی انٹرنیشنل گولز یعنی یِمن ہسا چھِ اگر یِم چھِ گلوبلی یِوان وٕچھنہٕ یِمن ہُنٛد مین مُدا چھُ ٹو امپروو د لایوز آف پیپل اراوُنڈ د ورلڈ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن مِلینیم ڈیولپمنٹ گولن ہٕنٛز کتھ کرو یُس زن یونایٹڈ نیشنز مِلینیم ڈیولپمنٹ گولز یِم ہسا چھِ 8 گولز یعنی یِمو ہسا کٔر یونایٹڈ نیشنز ہسا کوٚر سیٹ أسۍ ہسا تھاوو 8 گولز کٔرۍ یِمو یِم زن یِمن ہُنٛد ایم چھُ ٹو امپروو د لایوز آف پیپل اراوُنڈ د ورلڈ مگر یِم گولز کر آے اڈاپٹ کرنہٕ یونایٹڈ نیشنن کٔر یِم اڈاپٹ ان 2000 منٛز مگر یِم گولز کوٚتتھ تانۍ یِمو تھوٚو پنُن ٹارگیٹ کوٚتتھ تانۍ گژھن یِم 8 گولز فُلفل گژھٕنۍ تھرو آوُٹ د ورلڈ یعنی یِمن ہُنٛد سکوپ یُس زن چھُ یا چھُ سُہ گلوبل سکوپ یِمن 8 گولن ہُنٛد یِم 8 گولز ہسا گژھن گژھٕنۍ فُلفل by 2015 یعنی یِم 8 گولز چھِ یِم ہسا چھِ سیٹ کٔرمٕتۍ 189 یونایٹڈ نیشنز ممبر سٹیٹس یِم زن چھِ ان ستمبر 2000 منٛز یِمو ہسا کوٚر ایگری یِم زن یِم ایچیو کرو کر کرو یِم ایچیو کوٚتتھ تانۍ تھاوو ٹارگیٹ یعنی گیپ تھاوو یِمن گولن یِم نسا گژھن نہٕ کالہٕ کالے ایچیو کینٛہہ یِمن ہسا روزِ اباوُٹ 15 years یعنی 2000 پٮ۪ٹھ کوٚر یِمو لاگوٗ مگر کوٚتتھ تانۍ کرن یِم ایچیو یِم گولز 2015 تانۍ د مِلینیم واز ساینڈ یعنی یُس یہِ مِلینیم گولز یتھ أسۍ لیکھان چھِ MDGs مِلینیم ڈیولپمنٹ گولز یۄس زن یہِ ڈکلیریشن امِچ چھِ یہِ ہسا آیہِ ساین کرنہٕ ستمبر گلوبل سمٹ ہسا آیہِ یۄس زن ہیلڈ گٔے کتہِ ایٹ د UN ییٚمیُک ہیڈ کوارٹرس پٮ۪ٹھ امیُک ہیڈ کوارٹر ہسا چھُ نیو یارکس منٛز یتھ منٛز زن 149 انٹرنیشنل لیڈرسو کوٚر اتھ منٛز ٹیک پارٹ یعنی اتھ سمٹس منٛز یعنی تِمو ووٚن أسۍ کیاہ کرو امیُک مین ایم کیاہ چھُ کمبیکٹ أسۍ ہسا کرو رِڈیوس diseases, hunger, poverty, illiteracy, discrimination against women and environmental degradation یۄس زن گژھان چھِ کیازِ گۄڈے ووٚن أسۍ environment تہٕ development ہسا چھِ پانہٕ ؤنۍ interrelated اگر یِم separate کرو development حظ نہ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ توے چھُ ییٚتٮ۪تھ environmental degradation تہِ ہسا بچاو أسۍ یِم زن یِم MDGs were derived from this declaration امے declaration منٛز ہسا آیہِ یِم کڑنہٕ and specific indicators and targets were attached to them یۄس یہِ implementation of these 8 chapters of the MDG یہِ ہسا گوٚو sign in 1st January 2001 منٛز and the UN agreed to be holding such summit every 5 years to assess the progress یعنی أتھۍ سمٹس منٛزٕے 2000 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایگری کوٚرُکھ مگر وۄنۍ ناو آفٹر every 5 years ہسا آسہِ گژھان اکھ سمٹ اکھ کانفرنس ہیلڈ یتھ منٛز وٕچھان آسان یِم زن یِم 8 گولز چھِ تھرو آوُٹ د ورلڈ گٔیا یِم ایچیو کٕم گولز گٔے اَسہِ ایچیو د فسٹ فالو اپ to the Millennium Summit یہِ کتہِ گٔے سٹارٹ was held in 2005 at the 2005 World Summitس منٛز ہسا آیہِ وٕچھنہٕ یۄس یہِ ایفٲرٹس اچیومنٹس کٔرے اَسہِ حٲصِل کِنہٕ نہ یعنی یِم زن یِم goals they were adopted by United Nations in 2000 and were to be achieved by 2005 یِم زن یِم MDG goals چھِ أسۍ وٕچھو کٕم MDG goals چھِ گۄڈنیُکُے چھُ
eradicate extreme poverty and hunger. Second goal is achieve universal primary education. Third goal promote gender equality and empowerment of women. Fourth reduce child mortality. Fifth improve maternal health. Sixth, combat HIV, AIDS, malaria, and other diseases. Seventh, ensure environmental sustainability. And eighth one is develop a global partnership for world development. Yim zanim goal yim asa 8 goals yiman lekhan MDGs. Magar yim kotan yim asa 2015 astan. Magar I'm 2015 onwards asa dubuk yim asa karo nai kar UN kar nai set of goals. यमन जन नाव थोक SDGs Sustainable Development Goals यमन युन तेदाद आसर 17 Sustainable Development Goals यमन युन aim to improve the lives of people and the world around the world and to protect the environment यम MDGs यम आसर narrow मगर यम जन SDG Sustainable Development Goals yim also broad humas 8 yim 17 yani yim 7 goals tawai chhe lekhan SDGs Sustainable Development Goals magar both yim zan yiman scope global yani us wucho one by one kus goal goal of muda kya chu. So since 2001 the UN has given a lot of priority to the implementation of these MDGs, and though most of the targets had not been achieved by 2015 magar yimazos target tham 2015 astan magar kya goals nasa gaine fulfill ki as substantial positive progress has been recorded over 15 years. So I'm khadr thomut of acronym yani is kit kan ko yim yaad thayit yim zanim 8 MDGs 8 yim kit kan ko yaad thayit peace gym ch of phrase not peace gym ch of acronym not byak phrase few child HSW agar as yim phrases kat karo kodne ch food education, women, child mortality, maternal health, HIV, AIDS, sustainability, world partnership. Yem 8 goals. In the godness eradicate extreme poverty and hunger. Yem is food karo provide. Ko MC dasa godness dur hunger. Yem throughout the world yem suffer chikasan population through hunger. So kis kan ekavas dur karit godness karo provide food. One much of godness MDG first godnik goal kya chu Millennium Development Goal yat lekhan chi eradicate extreme poverty and hunger when eradicate khatam karo poverty the hunger yat godnik goal of UN United Nations using godnik goal chu yat lekhan chi MDG goal so such eradicate extreme poverty and hunger. Go recent gains in Millennium Development Goals first have been the number of hungry people in the world has about decreased. Most of the people world as hungry people in the world that is scarcity of food in the world has about decreased. Kam se yem sazan ye MDG first of launch karne to fewer than 1 billion though the Food and Agricultural Organization of the United Nations FAO Food and Agricultural Organization of the United Nations they believe that this number is settled unacceptably high. You nasa goal number 1 billion is hungry people in the world as much tim nasa gaine decrease gaine them ki magar you see MDG first athas ke target achi 3 targets imo karme consider godnik target kya ch MDG first eradicate extreme poverty and hunger godnik target to halve the population to halve the proportion of people to halve the proportion of people whose daily income is less than $1.25 come whose daily income timan lukan his income less than $1.25 per day asan so asa karo kam doyam to achieve full and productive employment asa karo as well as decent workforce all including young people and women you should doim target trim target to have to hollow the proportion of individuals suffering from hunger in the period between 1990 and 2015 यानी इसकी करो ये काम ये सफर से हुnger से कम year पे 19
1990 पे बराबर 2015 तान यानी ये गोल हसा गस गोडनिक आसन अस हसा गसो सप्लाई करन फूड अस हसा गसो यम जन हंग्री पीपल छ तिमन हसा गस वातन कम अज कम मिनिमम फूड हसा गस तिमन वातन दो वक्त की रोटी गस तिमन मुयसर आसन या हसा छ गोडनिक गोल यम से इरेडिकेट हको करित एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर मगर अचीवमेंट क्या गई एम से गोडनिक गोल अमिक अचीवमेंट क्या गई एक कंसिडरेबल रिडक्शन गई एक्सट्रीम पॉवर्टी मज थोड़ा सा अत मज कमी ओवर द लास्ट 25 years इन 1990 में 50% ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलपिंग नेशन खासकर ज्यादा हंगर हंग्री पीपल तिम लिव वुचन कत मज डेवलपिंग नेशन लिव्ड ऑन लेस देन तिज इनकम सोर्स per day $1.25 मगर as of 2015 that proportion has dropped to 14% मगर यह गई ड्रॉप अगर उदान 15% 1990 में मगर वन as per your report 2015 टारगेट सह गई ड्रॉप कोत 14% यह गोडनिक यानी यथ लिखान MDG फर्स्ट MDG Millennium Development Goal Eradicate Extreme Poverty and Hunger यह कत फ्रेज मन या तवलियो few child HSW food यानी गोडनेथ करो फूड प्रोवाइड second goal of Millennium Development Goals MDG2 that is to achieve universal primary education जैसे elementary education छे या सब बना universal यानी to achieve यानी सेकंड वन एजुकेशन टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG2 अमिक गोडनिक टारगेट यानी वन टारगेट फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट इज टू ensure that children universally include yes boys and girls will be able to complete a full course of primary education by 2015 यानी 2015 अस्तान ऐसा यम जन boys and girls च यमन जन is age is 6 to 14 years तिम आसा कसन receive करें तिम universal education यानी तिम गज आसन कम अज कम 8th standard गज तिम आसन हासिल कर्मुत यानी कंप्लीट एबल टू कंप्लीट ए फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन याजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते वन UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यथ मज एज ग्रुप 6 to 14 years यम ते जन बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स तिम आसा गस करन कंप्लीट एज पर MDG2 by 2015 यानी यम साथ एजुकेशन दिमो यन ये स्कैर्सिटी ऑफ फूड डेवलप हसा गस क्या एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट यानी एजुकेशन से हसा गस नेशन डेवलप यानी ब्याक ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिक ब्याक विंग दैट इज द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN claim यानी FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN तिम क्लेम करान क्या नियरली 57 million primary school age children यानी throughout the world 57 million यम जन बच्चे यम जन स्कूल गोइंग यमन एज तिम गसान स्कूल मगर तिम छन अटेंड कर स्कूल के 80% यम जन तिम मन तिम लिव करान इन रूरल एरिया के डर्थ ऑफ स्कूल या तिमन एक्सट्रीम पॉवर्टी तिम छन एफोर्ड हेकान करित के तिम छन हेकान तिहिंद पेरेंट्स एफोर्ड करित के तिम हेकान बच्चे पन स्कूलन में सोचित दिस मेड द अर्बन रूरल नॉलेज एंड एजुकेशन डिवाइड I'm gap between rural to urban population gap use main obstacle to achieve global primary education by 2015 astan yani 80% of home lives in rural areas yani 57 million primary school age going children are such an attend hekan karit im schools ki yetem receive hekan karit pan primary education ami ना स्कूल गसन से क्या गई गैप हसा गई पद गलब गई पद बिटवीन अर्बन तो रूरल एरियाज अम यो हसा बने मेन ओबस्टैकल कम खतर टू अचीव प्राइमरी एजुकेशन बाय 2015 ये फैक्ट दैट रूरल चिल्ड्रन हसा हाईली गसान अफेक्टेड यम कम से अफेक्टेड यानी यम जन देहाती लोग यमन ज्यादा अफेक्शन गसान यानी यमन ज्यादा समस्या या कम से या यमन हंगर एंड माल न्यूट्रिशन यमन गजा वातान मगर तथ सुन
बैलेंस्ड डाइट कि यम इफेक्ट क्या ये लर्निंग एबिलिटी पे इफेक्ट गोडनेथ ये बुक इन मिलान तम इनग्रीडियंट्स फूडस मज यानी बैलेंस्ड डाइट मिलान कि अम इफेक्ट पेवान ये लर्निंग एबिलिटी पे स्कूल अटेंड कर सच फूड सिक्योरिटी एंड प्राइमरी एजुकेशन यह एड्रेस कर एट द सेम टाइम टू गिव रूरल पीपल यानी at the same time फूडस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर प्राइमरी एजुकेशन दिन रूरल पीपल यानी अम कैपेसिटी फील themselves and overcome hunger अम hunger कम poverty and illiteracy यानी protection social protection brings together all efforts for education and food security towards increase in effectiveness को second achieve universal primary education. Third MDG goal, that is promote gender equality and empower women. यानी empowerment of women तवचे लिखमत women यानी यम साथ वर्ल्डस नजर दिमो यानी वर्ल्ड यह पॉपुलेशन कत करो अत मज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन फर्क करान बिटवीन मेल एंड फीमेल अम सम इम्प्रूवमेंट सन लाइफ स्टैंडर्ड अत पे बुर असर यानी यूनाइटेड नेशन यमो दो ब्या गोल ग्लोबल गोल is promote gender equality as per equal work equal wages and empower women यानी empowerment as women पे करें in all fields of life यानी ये eliminate करने खतर to eliminate gender disparity खास कर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2015 and 2005 and in all levels of education by 2015 यानी ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन all walks of life लबन especially प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2005 तान खत्म यानी इरेडिकेट कर मेल वर्सेस फीमेल डिस्क्रिमिनेशन मगर इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी यानी लिखान हायर एजुकेशन ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर 2015 तान खत्म इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन यम साथ ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म गई वर्ल्ड हसा पक ब्रो वर्ल्डस हसा डेवलपमेंट यानी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द टोटल एंड इक्विटेबल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन यानी पॉपुलेशन अत मज important pillars of the development यानी women ते men ते तवे no discrimination in efforts aimed at improving poverty reduction food security मेले and sustainability of rural development यानी अगर without gender equality and the economic and social improvement for rural women food and security cannot be achieved युतान gender equality how in all walks of life तो impossible क्या economic and social improvement especially for rural women food and security achieve कर target यानी achievements क्या करे अत हासिल to promote gender equality and empowerment women and increase in number of girls in schools यानी रिडक्शन अटेंड गर्ल्स स्कूल्स की अत मज इंक्रीज गई अत इन 2015 अगर कंपेयर करो ये डेटा विथ 2000 अत मज इंक्रीज यानी इथे द डेवलपिंग वर्ल्ड एज एन होल हैज अचीव्ड द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग जेंडर डिस्पैरिटी इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इथे द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन in vulnerable employment अगर कंपेयर करो टोटल फीमेल employment has reduced by 13% in the period between 1991 and 2015 time. Promote gender equality and empowerment of women period reduce go between 1991 and 2015 यह compare कर 9% decrease for men. One ब्याका goal यात लिखान MDG for reduce child mortality यानी बच्चा ज्यादा मरा यह कित कम कर रिडक्शन कित करो child mortality मत यानी
अमवात बचन सह कित हेको कम कर ब्या मोटिव ऑफ UN यूनाइटेड नेशन टू रिड्यूस द अंडर 5 यानी ज्यादा पान बच्चे मरान कत एजस मन 1 to 5 years एज तथ मन ज्यादा मॉर्टलिटी रेट गसान यह गई कम बाय 2/3 इन द पीरियड बिटवीन 1990 एंड 2015 मन यानी मरान कम ज्यादा अंडर न्यूट्रिशन वातान एडवोकेट सप्लाई ऑफ फूड वातान कह न्यूट्रिएंट्स वातान कह यानी अंडर न्यूट्रिशन इज एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट टू मोर देन 33% of all deaths in children 33% deaths गसान आकर तिम गसान तिम मेन काज अंडर न्यूट्रिशन अंडर 5 मन सो के इम्पोर्ट्स आय तुल इम्प्रूवमेंट हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन यह इंक्रीज द चांसेस ऑफ चिल्ड्रन ग्रोइंग टू अडल्टहुड अथ रिगार्ड्स मन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तिम कर प्रोग्राम लॉन्च with efforts by the renewed efforts against child hunger and undernutrition reach renewed efforts against child hunger and undernutrition यह मजन WHO UNICEF help communities या households तिम कर secure access to nutritionally adequate diets to minimize child undernutrition कित minimize कर improving कित करो complementary feeding करो for babies or giving foods in addition to breast milk यानी युजन बच्चे mothers मिल्क दिवान तम बगैर करो कि एडवोकेट फूड्स कर प्रोवाइड हैज टू लेड सिग्निफिकेंट रिडक्शन अम चाइल्ड मॉर्टलिटी काज गसान बाय अंडर न्यूट्रिशन कह गोल्स यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यह लिखान MDGs यानी टोटल 8 गोल्स सेट फोर्थ बाय यूनाइटेड नेशन मगर यथ वीडियो मज कर जिक्र सिर्फ 4 गोल्स यथ गोल फूड एजुकेशन वुमेन चाइल्ड मॉर्टलिटी नेक्स्ट वीडियो तथ मज पढ़ो अदर गोल्स ऑफ UN यानी अदर गोल्स ऑफ MDGs अगर तो ये वीडियो पसंद आमुत तुम करो सन चैनल एजुकेशन एनक्लेव लाइक share and subscribe. God bless you.